So there you go. Gonna start today's session. Let's wait for people to join in to practice English. Well, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो 10 मिनट के बाद से शुरू करिएगा because starting 10 minutes for practice, like day-to-day life conversation with my students. So, good evening, Mohit sir. Good evening, Pooja ma'am, and good evening, Simi ma'am. Mohit sir, I'm good. Thank you. And how are you? And Pooja ma'am, I'm good. Thank you. And how are you? And what about you, Simi ma'am? How are you? Sounds good. It's really nice. So, my day was awesome. How was your day? Me too, Simi ma'am. As I said, my day was awesome. So, just asking about your day. How was your day? Good evening, Priya ma'am. I'm good. Thank you. And how are you? Yeah, you're welcome, guys, those who are joining in. So, if you write a message, so it's better if you know, start participating in this. And if you're just, yeah, I've seen that tattoo. That looked great. Okay. Yeah, I got a reply on that as well. So, thank you for your response. Have you packed your bags, sir? Ready for journey? Not yet. So, the day was really very hectic because in the morning I was busy with the first of all with designing the tattoo, and after that busy with tattooing. After that, as you must be knowing, today it's my nephew's birthday. So I took my mom to my sister's place, and we really had a great time over there with all of my relatives, especially my Jiaji, my Didi, and my nephew, and my nephew's cousin. And we had a good time. And my sister made matar paneer, so it was delicious. Gajar ka halwa, and there were two cakes, were very fresh and very, you know, I would say it was a delight to eat them. And so I came back. I was a bit tired, so I just had a nap. And in evening, then I got busy with making the lessons and making the promotional, pamphlets. And after that, Indian match started, so I started watching match while doing my activities. So I haven't packed my bags yet, and after the session, now it's my packing time. So of course, after the session, I'm gonna pack my bags. No, sir, Mohit, sir, I'm not coming on bike. So, but I'm coming by my car. So because I have to carry some things with me. Well, while I'll be back to Jaipur, so I have some stuff at Jaipur, and I want to bring that stuff to. Sorry, in Bhopal I have a stuff, so I have to bring it to Jaipur. So I'll do that. Okay. So what about you guys? It's your time, because here I'm practicing speaking. So of course I'm speaking. The more I speak, I become more fluent. So the same, tip I would like to share with you. So you right now you cannot speak, but you can write in the chat box, because when you write somewhere, you are speaking inside your mind. So, and I always tell you that whenever you write anything, you should especially speak up. कुछ बोल कर लिखो. So if you're writing that, I take an example of Mohit sir, that, so sir, what about tomorrow's session? So अगर मैं इसको टाइप कराऊं तो मैं यही मन में नहीं चला के मैं बोलते बोलते करूंगा. So sir, what
अबाउट टुमारो सेशन, अगर सिमी मैम का सेंटेंस में लिखूंगा तो मैं लिखते लिखते बोलूंगा कि यस सर आई सॉ दैट टैटू। सो इसका मतलब है आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। सो साथ साथ में आप you're killing two birds with a stone here. So I had curry chawal for lunch. Like I'm speaking. When I'm speaking, it means I'm practicing. आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो इफ आई डोंट स्पीक, मन में मैंने पढ़ लिया, यानी मेरी रीडिंग की तो प्रैक्टिस हो रही है, बट स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं हो रही। सो आप रीड करते हुए किसी का मैसेज अगर आप रीड कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की, और लिखते वक्त भी आप बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट आई ऑलवेज टेल यू मतलब आपका मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। सो हमेशा बोल बोल कर आप टाइप करो, बोल बोल के दूसरों के मैसेजेस पढ़ो। मैं हमेशा आपको बोलता आ रहा हूँ कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, तो आप हमेशा बोल बोल के करिए, ठीक है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके अगर आसपास में लोग हैं और अगर वो कुछ अपना ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको अगर डिस्टर्बेंस ना आपको हो, तो आप बात अलग है। सो यू कैन यूज अनदर रूम, आप वहां पे जाकर अटेंड कर सकते हो सेशंस। आई मेड टॉप ramen noodles for me and my parents. Okay, good. I had rajma chawal for lunch. Good evening, sir. Good evening, Sudhir sir. I'm good, thank you. And how are you? And how is your life going on? Is everything hunky dory, or is everything in doldrums? The green dream catcher is dispatched, isn't it? You you got it. So yeah, the green one and the brown one, two have been dispatched. And tomorrow I went to office and my day was very busy. I had veg upma for breakfast, dal chawal for lunch. Please everyone like the video. Yup. So everyone, yeah, I wonder, like, who all are right now. Please, guys, I request everyone that if you are watching this, please be, be an active person and take the most of this opportunity that you are communicating, you're writing your sentences. So, good evening, Kabira, ma'am. I'm good, thank you. And how are you? So, fine, good. And two, the pink one and the yellow one are going to be tomorrow in Bhopal. So, good evening, sir. Good evening, Ranjana ma'am. How are you? Today I have done homework for last three sessions. Yep, I saw your homework. Just I think in one there were some mistakes. I'm good, Ranjana ma'am. Thank you. Good evening, Sanidhya sir. I'm good, thank you. And how are you? So I've liked, yeah, because eight people are right now live, and eight likes. I got it, but there is not now the number nine. I've done. I told you, uh, Mohit sir. I've seen you and I've commented on this also. Okay, I've seen your homework and I said there were some mistakes. So you also please check out which mistakes you made. I'm good too. Sounds good. So well, nine people, nine likes. Good. Mohit sir asked tomorrow's session. Okay, you're asking about the tomorrow's session. I'm sorry. Yeah, I read it, but I forgot to answer that. Sorry. So before that sentence, okay, my life is going on well. I studied a lot today. That's very nice. Keep it up. Well, when I'll be tomorrow session, I hope by the evening I will have reached Bhopal. So I guess we'll have the session because by 10 o'clock I will be bit because after reaching Bhopal I would like to take some rest, and because it's going to be 11 or 12 hours journey. So
Of course, it may be tiring because I really enjoy driving, so I don't think that it's gonna be very tiring, but it may be. So I just want to say that uh, tomorrow's session, positively I'm gonna conduct. So that's very nice. And from day after tomorrow, I'm gonna be busy with my tattoo schedule. So, well, it's 10 o'clock. Time to start today's session. Here we go. The first word जिसके बारे में हम लोग अभी आज अपना शुरू कर रहे हैं, that is put out. Clear? So put out. मैं आपको पहले एक चीज बता दूं. It's a phrasal verb. ठीक है. Put out. इसके मल्टीपल मीनिंग्स है. एक ही फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मतलब हैं, बट बिकॉज आज के सेशन में बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो और फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है. दैट इज वाई मैं सिर्फ इसका एक मीनिंग लेके आज बात कर रहा हूँ. तो पुट आउट को आप जब फ्रेजल वर्ब में यूज करते हो तो बहुत सारे मीनिंग्स में से इसका एक मतलब है बुझाना. ठीक है. इस फ्रेजल वर्ब का पुट मतलब यहाँ पे रखना नहीं है. पुट आउट कई बार हमें ऐसा लगता है कि कहीं बाहर रखना, एक सेंस वो भी निकल के आता है, बट एक पुट आउट का मतलब क्या है, जो इसको मेनली जब ये फ्रेजल वर्ब में यूज होती है तो बहुत इसका बड़ा यूज होता है, वो है बुझाने के बारे में. तो कोई भी जैसे लोग बीड़ी सिगरेट ये करते हैं तो इसको बुझाने के लिए आप पुट आउट वर्ड यूज कर सकते हो. इवन जो चूल्हा होता है उसको भी आप बुझाने के लिए पुट आउट वर्ड यूज कर सकते हो. एंड इसके अलावा जब कहीं पर आग लग जाती है तो जो फायर फाइटर्स होते हैं वो भी आपको क्या करते हैं, पुट आउट करते हैं. यानी कि दूसरे वर्ड भी हैं आग बुझाने के लिए, बट पुट आउट फ्रेजल वर्ब को हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो ये एक सेंस हो गया. फाइन. नाउ अब जो मेरा आपसे मेन रिक्वेस्ट रहेगी वो ये रहेगी कि जब आप पुट आउट वर्ड को यूज करें तो आप एक और यूज कर सकते हैं बुझाने के सेंस में ही, कि जितने भी बल्ब्स होते हैं ना, टॉर्च हो गई, बल्ब हो गया, इनको बुझाने के लिए, मतलब इनको स्विच ऑफ करने के लिए, जब इनको भी बंद करना होता है तो भी इंग्लिश में आप पुट आउट वर्ड यूज कर सकते हो. तो जब एक तो हो गई आग जहां पे रियल में आपको फ्लेम्स दिखाई देंगी, उसको बुझाने के लिए आप ऑफ कोर्स पुट आउट वर्ड यूज कर सकते हो. दूसरा, डे टू डे लाइफ में जब आप यूज करोगे कहाँ पे, बल्ब को बुझाने के सेंस में, जैसे आप टेलीविजन को पुट आउट मत यूज करिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा ना. सो पुट आउट द लाइट्स जो वर्ड है उन्हीं के लिए यूज करिएगा. टॉर्च के लिए आप पुट आउट वर्ड यूज कर सकते हो, ना कि जो मैंने आपको बताया कि आप ये मत करना कि फैन ऑन है तो आपको लग रहा है कि पुट आउट द फैन प्लीज. नो, आप फैन को कभी बुझाते नहीं है. तो जो चीज जलती है, एक्चुअली लाइट्स जलती है ना, हम लोग यही तो बोल रहे हैं कि देखो पीछे बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो इनको जलना भी कहते हैं. ये उस तरीके से नहीं जल रही, बट ये भी जल रही हैं, तो इनको हम पुट आउट वर्ड यूज कर सकते हैं. और जब आप ये यूज करेंगे तो इसका एक सेंटेंस मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी मैं आई वांट कि आप लोग इसके सेंटेंसेस बनाइएगा. जैसे डू यू पुट sorry do you put the lights off before going to sleep? There you go. Put out the flashlight. Yes, flush, not flush. It's a flashlight. Sorry. So yes, put out. आप इसको यूज कर सकते हो. और इसका एक जो बहुत I'm so sorry. I just by mistake is written that put off. It's not put off. It's put out. आप करेक्ट कर लीजिएगा. This is not going to be put off. It is put out. Put out. Yes, Simi ma'am, your sentence is right. अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम किसी चीज को बंद करते हैं तो एक तरीका ये है कि आप मेरा जो सेंटेंस देखोगे उसमें क्या है, पुट द लाइट्स आउट. ठीक है. तो पुट और आउट के बीच में आप उस चीज का नाम लेकर बात कीजिए जिसको आपको बंद करनी है. बाकी आप पीछे भी लगा सकते हो. आई डोंट पुट आउट कैंडल्स ऑन माई बर्थडे. अ गुड सेंटेंस. इसको आप प्रिया मैम ऐसे भी कर सकते हो, आई डोंट पुट कैंडल्स आउट ऑन माई बर्थडे. ओके, यू डोंट. इट्स I've seen some in some families. I've seen that that people don't like to put candles out on their birthdays. कैंडल्स को नहीं करते, वो जलाते जरूर हैं. दे लाइट अप द कैंडल्स बट दे कीप इट असाइड. साइड में रख देते हैं और उसको फिर वो बुझाते नहीं हैं.
और बहुत लोगों के अंदर जो ट्रेंड है वो तो हमेशा यूजुअली पुट आउट करते हैं. सो यू गाइज आर गेटिंग बैक. सो आप में से कुछ लोगों की बात कर लेता हूँ. अभी मुझे आप लोगों के बहुत फास्ट रिप्लाई नहीं आ रहे. यू इट्स Bharti Sahu, ma'am. First of all, it's good to see you. Thank you so much. I always put the lights off before going to. यहाँ पे हमें एक मैंने पीछे बताया था भारती मैम कि यहाँ पे ऑफ नहीं लगाना, हमें आउट लगाना. दैट इज बाय मिस्टेक. वो मैंने मिस्टेक हो गया मुझसे एंड आई डोंट वांट टू रिमूव दैट सेंटेंस. उसमें पुट जो लाइट है आउट करना है, ऑफ नहीं करना. ठीक है. सो दैट इज माय मिस्टेक. आई रिक्वेस्ट दैट आप वो उसको हटा दीजिएगा. सो आई ऑलवेज पुट द लाइट्स आउट. ठीक है. सो द before going to sleep, keep it temple. Keep it temple. Ma'am, simple बोल रहे थे आप. I don't know. Put out the candles before light has came. मोहित सर has came. has के साथ second form गलत. Before the light has come. Please, light has come. Okay, put out the candles, please. बिकॉज प्लीज. हाँ, उसके आगे आपको रीजन भी बताना चाहिए. मेरे उसमें बिकॉज वर्ड नहीं था तो आई कुड नॉट लिंक इट प्रॉपरली. सो पुट आउट द कैंडल्स बिकॉज, प्लीज, बिकॉज लाइट हैज कम. आई गॉट सर. थैंक यू सो much. I put the lights out before going to sleep. Yes, I put the lights out before going to sleep. Very nice, because sometimes people find it difficult to sleep when the lights are on. Please put out the light because, yeah. Yes, I always put the lights out before going to sleep. Good. Put out the cigarette out. Very nice sentence. चलो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दे देता हूँ. आपको एक याद है ग्रामर का स्ट्रक्चर? जब आप कभी किसी से कुछ इस बहुत ही फॉर्मल तरीके से ये रिक्वेस्ट करें और आप ये भी चाहते हैं कि सामने वाला आपका जो काम है उस काम को करने में आपको ऐसा भी लगता है कि वो शायद हो सकता है बुरा भी लग जाए उसको, और आप बहुत फॉर्मल ये सेंटेंस रखना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा वुड यू माइंड वाली ग्रामर यूज जरूर करिएगा. वुड यू माइंड पुटिंग. ठीक है. वुड यू माइंड पुटिंग आउट. और उसके बाद आपको क्या करना है, उस चीज का नाम लगाना है. आप सिगरेट की बात करें तो प्लीज पुट द सिगरेट आउट बिकॉज इट इज पब्लिक प्लेस. यस, योर सेंटेंस इज वेरी नाइस. बट आप अगर इसको यू ना करके, अगर मेरे वाला सेंटेंस अगर कैंडल कीप इन टेम्पल, अच्छा, बट ये हमें पुट आउट को यूज करना है. पूजा मैम, पुट आउट स्टडी रूम्स लाइट्स. ओके, बिफोर स्लीपिंग. सो वुड यू माइंड पुटिंग आउट योर सिगरेट प्लीज. सो आप ये जरूर यूज करिए कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यूज किया है. और ये थैंक यू सो मच डियर सर, क्योंकि आपके सेंटेंस से मेरा जो नेक्स्ट सेंटेंस था वुड यू माइंड वाला, ये मैं अब आपके साथ प्रैक्टिस करने वाला हूँ. क्योंकि पहला हो गया, हमारा पहला जो वर्ड था वो था पुट आउट, है ना. हमने पहला किस पे प्रैक्टिस करना शुरू किया, एक फ्रेजल वर्ब पे. अब जो सेकंड पार्ट शुरू होगा वो है वुड यू माइंड की ग्रामर के ऊपर. ये अब ग्रामटिकल पार्ट पे प्रैक्टिस होगी. सो वुड यू माइंड, और फिर आपको क्या करना है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. प्लीज माइंड के बाद टू लगा के फर्स्ट फॉर्म मत लगाइएगा. वुड यू माइंड एक्शन प्लस ING लगाकर आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है अब मेरे साथ. ठीक है. और लाइक दिस वे, द वे आई रोट द सेंटेंस. आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक्शन देखना है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वुड यू माइंड वाला रूल को, वो आपको यूज करने हैं. ठीक है. सो वुड यू माइंड पुटिंग आउट योर सिगरेट प्लीज. इसके अलावा आप और अलग अलग सिचुएशंस देख लीजिए. नो सर, आई एम सेइंग जो कैंडल केक और पुट करते हैं वो टेम्पल में रखते हैं. ओके, बट दिस वाज नॉट क्लियर. Got it, Pooja ma'am, your point. No, sir, I'm saying जो candle की. Would you mind putting out the cigarette? Spelling check करनी है बस आपको मोहित सर. सिगरेट की स्पेलिंग ऊपर. So you have to see. There you go. So would you mind giving your mobile phone
for a while. Okay, गुड सेंटेंस. इसके बाद प्लीज भी जरूर लगा दीजिए, एंड देन क्वेश्चन मार्क एज वेल. फाइन. सो there you go. Good. Where are you guys? Simi ma'am, you're not participating. There are some. Kabira ma'am is also not there. Okay, and I think Divyanshi ma'am and Simi, sorry, not Simi. Today is Yashi ma'am are off. I guess they are not. Bhanusar is not there today. Rohan sir is also not there, and Jatin sir is also not there. Sunday, everybody, I guess, enjoying the Sunday. Must be partying somewhere. Would you mind putting out a cigarette? It's good. अब प्रैक्टिस किसके ऊपर करनी है हम लोगों को? वुड यू माइंड वाली पे प्लीज. आपको जब ये कहना है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा ये काम करने में, इन दैट सेंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. जैसे वुड यू माइंड bringing a glass of water for me? Would you mind? और बहुत सारी सिचुएशन है, जैसे मैंने जब इसको स्ट्रक्चर में पढ़ाया था बहुत पहले, जैसे वुड यू माइंड ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी प्लीज. देखो प्रिया मैम ने लिखा. सो वुड यू माइंड गेटिंग अ साइड प्लेस? ये डे टू डे लाइफ में आप यूज करेंगे जब कोई व्यक्ति आपको लगे कि आपके रास्ते के बीच में कहीं खड़ा है, आप उन्हें बोलिए वुड यू माइंड शिफ्टिंग प्लीज. ये सेंटेंस सुधीर सर आपको शायद याद होगा, मैं क्लास में सबसे ज़्यादा यूज़ करवाता था आप लोगों से. जब आपको किसी को शिफ्ट होने के लिए बोलना हो तो आप बिल्कुल बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि वुड यू माइंड शिफ्टिंग प्लीज, वुड यू माइंड पुटिंग आउट द cigar please. Okay. I don't see in India, usually people are smoking cigar in public places, you know. Rich people, like to smoke cigars. So would you mind bringing vegetable please? Of course you can write this. और कहीं पर देखो अपने दोस्तों से would you mind क्या यूज करोगे अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा काम आप अपने दोस्तों को करने के लिए कहना चाहते हो जिसपे वो कहीं बुरा मान सकते हैं. ठीक है. जैसे वुड यू माइंड लेंडिंग मी. बहुत लोगों को कहीं ना कहीं दूसरों को उधार देते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी? वुड यू माइंड लेंडिंग मी $100? वुड यू माइंड जो भी है. ठीक है यार, चाय पिलाओगे तो चाय पीने के लिए भी बोल सकते हो कि आपको लगे कि आप बहुत चाय पीते हैं और आपकी फैमिली में किसी व्यक्ति को अगर जो बहुत अच्छी चाय बनाते हो और आपको ऐसा लगता है कि उनको चाय बनाना पसंद नहीं है, बनाते बहुत अच्छा है, देयर आर सम पीपल, और आपको बार बार चाय चाहिए होती है, तो आपको रिक्वेस्ट यही करनी पड़ेगी कि प्लीज वुड यू माइंड मेकिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी. So would you mind bringing cake, please? Yeah. Would you mind putting out shoes? Shoes को हम put out नहीं करेंगे. ठीक है. Out. Would you mind lending? अच्छा, आप उस सेंस में कहना चाहते हो कि बाहर रख दें घर के. फिर आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, है ना यादव सर. वुड यू माइंड पुटिंग द शूज आउट? इसमें पुट आउट से पहले आपको शूज जरूर लगाना पड़ेगा. वुड यू माइंड पुटिंग the shoes out of the house, yeah, out of the room. Fine. So ये लगाओगे तो वो थोड़ा क्लियर सेंस आएगा. वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर ड्रेस प्लीज? यस, दोस्तों में ये भी होता है कई बार अपने कपड़े पता नहीं शायद लोगों को देना पसंद होता नहीं होता. वुड यू माइंड सेंडिंग मी योर क्लास नोट्स? यस. वुड यू माइंड पुटिंग ing लगेगा मोहित सर, है ना. Would you mind? Mind plus action ing की practice है. So would you mind putting out the bulb please? Yeah, because everyone is going outside. बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं. एक और चीज बताता हूँ. अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं, आपका घर जो है वो 2 स्टोरीड है या 3 स्टोरीड है, तो आपको ये पता होगा ना कि जो अगर हम फर्स्ट स्टोरी पे हैं तो इसका मतलब है जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो डाउन स्टेयर्स होगा. मतलब नीचे की जब हम बात करते हैं तो डाउन स्टेयर्स बोलते हैं उसको. और अगर आपको लगता है कि नीचे का जो डाउन स्टेयर्स में जो बल्ब जल रहा है या जो लाइट्स चल रही हैं, कोई भी लाइट्स हो, अगर वो जल रही हैं तो आप उस जगह पे क्या यूज कर सकते हैं कि वुड यू माइंड पुटिंग द लाइट्स आउट डाउनस्टेयर्स? तो डाउनस्टेयर्स लगा दीजिएगा. वुड यू माइंड मेकिंग टी फॉर मी? वुड यू माइंड टेकिंग योर शूज ऑफ आउटसाइड ऑफ? ठीक है. वेरी नाइस सेंटेंस. Of the room, outside of the room. Would you mind joining? Would you mind joining your group?
Would you mind joining your group? Yeah, would you mind joining my group? Would you mind dropping me in my home, please? Would you mind making white hot pasta for me? No, I wouldn't mind. Definitely आप ये सेंटेंस जरूर बना सकते हैं. Would you mind helping me, please? So, would you mind helping me, please? Never mind. Would you mind giving me your notes? बिल्कुल पूछा मैम, you are right. Uh, Still, you guys are थिंकिंग अ लॉट आई गेस. अपने से बहुत लोग बहुत देर से सोच रहे हैं. सोचने में हमारा टाइम बहुत गुजर रहा है. बिकॉज राइट नाउ आई सी, लेट मी काउंट, पूजा मैम, सानिध्य सर, मोहित सर, kabira ma'am, ranjana ma'am, and sudhir sir. 6 people have been, simi ma'am, and yadav sir. So I think 2 3 people have not been active in the practice session. Otherwise everyone is taking. Would you mind giving your contact number? Yeah, your sentence is absolutely right. Would you mind giving me your contact number? Of course, my contact numbers are everywhere. If you find, I guess, I think you follow me on Instagram. On my every Instagram page, I have my contact number. So whenever you want to find my number, so you can find it everywhere. It's not a big deal. So it's very simple. Would you mind giving me your address? Yeah, Jaipur. So you have my contact number. Once you reach Jaipur, would you mind making a dream catcher for me? I would not mind. I would love to make a dream catcher for you, but let's be professional. So you have to book the dream catcher. They are not very costly. They are very reasonable if you compare it with the online stores and the quality what you get. Would you mind switching on TV? Switching on पे आ गए हम लोग. Okay, fine. Thank you so much. अभी would you mind की बहुत प्रैक्टिस हो गई है. अब आपके साथ जो नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करने वाला हूँ मैं, उसको बहुत ध्यान से सुनना. It's gonna be confusing. मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये confusing होने वाला है. तो बिल्कुल है, कंफ्यूजन आएगा आपके दिमाग में अगर आप उस चीज को थोड़ा ढंग से नहीं समझेंगे. बिकॉज एक वर्ड है, उसको आप कितने अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. एंड यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्रेजल वर्ब के बारे में बात नहीं कर रहा. वुड यू माइंड टीचिंग मी टैटू प्लीज? ओके, ऊपर के सेंटेंस चलेंगे. सिमी मैम ने वुड यू माइंड गोइंग विद मी फॉर शॉपिंग? सिमी मैम, अभी जो मैं आपको ग्रामर दूंगा ना, यहाँ पे आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छा और अच्छा बना सकते हो सेंटेंस को. ठीक है, आपके लिए स्पेशली ये सेंटेंस बहुत काम आएगा जो मैं ऑलरेडी आज बना चुका हूँ. सो आई थिंक आई हैव वेरी पॉजिटिव वाइब्स. सो जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप लोग ऑलरेडी क्रिएट कर लेते हो, कहीं ना कहीं मेरे को वहीं पे लेके चलते हो. योर सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट. ग्रामेटिकली आपने बहुत सही लिखा है. उसको और बेहतर कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी. वुड यू माइंड टीचिंग मी? टैटूइंग आएगा, फिर टैटू में आईएनजी लगा देना. ठीक है. सो वुड यू माइंड टीचिंग मी टैटूइंग प्लीज? नो सिमी मैम, आई वुडंट माइंड, बट you have to pay the charges. Would you mind writing another sentence? Yep. So मोहित सर ने शायद ये सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा, है ना. मैंने पूजा मैम के जो इन्होंने पे जो उन्होंने प्रैक्टिस की, उस पे उसके ऊपर उन्होंने एक सेंटेंस लिखा और वो सेंटेंस थोड़ा सा सेंसफुल नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उनके नीचे जो रिप्लाई में लिखा वो ये सेंटेंस था जो मोहित सर ने अभी यूज किया. वुड यू माइंड राइटिंग एन अनदर सेंटेंस? ओके सर. वुड यू माइंड गिविंग योर एड्रेस? ऑफ कोर्स आपके सेंटेंसेस राइट है. चलो, लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड, द सेकंड वर्ड टुडे, एंड दिस इज टेक. प्लीज, आज मैं टेक का एक अलग यूज बताने वाला हूँ. आप में से बहुत लोग ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट यूज, बट इसके सेंटेंसेस हमें लोगों को बहुत प्रैक्टिस करना है. बिकॉज ये जो वर्ड जहाँ पे आज हम लोग यूज कर रहे हैं, ये आप और मैं सबकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है. इस सेंस में जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और अभी हम टेक को यूज करेंगे किसी भी काम के होने में जितना समय लगता है, उस जगह पे हम टेक को जब यूज करते हैं. मैं वो वाली ग्रामर के बारे में बात कर रहा हूँ. जैसे एक सेंटेंस मैं बना देता हूँ इसका, कि आपको जब भी
एड्रेस प्लीज, ओके, देन क्वेश्चन मार्क। सो जब भी आपको कोई भी काम करने में टाइम लगे, प्लीज आप ये सेंटेंस ना बना के ये आई टेक, हमेशा बनाओ इट टेक्स, क्योंकि आपको वो जो काम करते हो उस काम को करने में टाइम लग रहा है। तो आप समय की बात कर रहे हो, तो जब भी हम किसी भी काम को करने में समय लेते हैं, टाइम हमें लगता है, बट हम समय के बारे में बात कर रहे हैं, समय गुजरता है ना, सो इट टेक्स, फाइन। और उसके बाद हमेशा मी लगाना, मी क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हैं कि उस काम को करने में आपको कितना टाइम लगता है। सो इट टेक्स मी, ये 3 शब्द ज़रूर लिखना है, इट टेक्स मी। क्यों लिखना? क्योंकि आप प्रेज़ेंट की बात कर रहे हो। अगर आप पास्ट की बात करोगे तो ऑफ कोर्स ग्रामर कहाँ चेंज हो जाएगी, पास्ट में जाके टेक्स का टुक बन जाएगा। इट टुक मी, यानी कि आपको वो काम करने में उतना टाइम कहीं न कहीं लगा। और आप भविष्य की अगर बात करोगे तो आपके पास जो टाइम वर्ड्स हैं वो हैं विल, आप बात कर सकते हो मे से, आप बात कर सकते हो माइट से, आप बात कर सकते हो नहीं प्रिया मैम, वेट 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 वेट, अभी आप जो थोड़ा सा रुक जाओ तो मैं तो लगता है कि ज़्यादा बेहतर आप समझ के और बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना पाओगे। सो इट टेक्स मी, उसके बाद मैंने वो टाइम को लगा दिया, जो भी हम टाइम पीरियड ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि कितना टाइम उस काम को करने में लगता है, फिर टू लगाना प्लीज, और उसके बाद उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा देना जिस काम को करने में आपको टाइम लगता है। इट टेक्स मी, इस जो मैंने अभी ये जो एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दी आप लोगों को, इसको अगर हम हिंदी में कहते हैं तो कहते हैं फिल इन करना। फिल इन मतलब है कंप्लीट करना, तो आपको ये कंप्लीट करना है। इट टेक्स मी, और यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन बताना है। जैसे अगर मैं अपनी एक सिंपल सी बात करूँ कि अगर मुझे नहाने में 10 मिनट लगते हैं तो इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू हैव अ बाथ, ठीक है? तो टू के बाद क्या लगाया मैंने? हैव, एक्शन के लिए। मैं टेक अ बाथ भी यूज़ कर सकता था, फाइन। सो आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हो, टू टेक अ बाथ और टू हैव अ बाथ। सो इट टेक्स मी, उसके बाद वो टाइम ड्यूरेशन, टू, एंड फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। सो जैसे अगर मैंने पास्ट की अगर मैं बात करूँ, इट टुक मी, जैसे जो पीछे अगर आप एक ड्रीम कैचर देख रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि जो एक ड्रीम कैचर है स्मॉल साइज का, उसमें मुझको बनाने में 5 घंटे लगे, तो इट टुक मी 5 आवर्स, ठीक है? इट टुक मी 5 आवर्स टू कंप्लीट, फाइन, टू कंप्लीट द स्मॉल साइज ड्रीम कैचर, द येलो वन, फाइन। सो ये पास्ट में आप यूज कर सकते हो। सो पास्ट के लिए इट टुक मी, क्लियर? जब फ्यूचर की बात करोगे तो इट विल टेक, अगर आप श्योर हैं कितना टाइम लगेगा तो विल ज़रूर लगाना। इट विल टेक मी, आप अपनी ही बात करिए अभी पहले सेंटेंस में प्लीज़, कि इट विल टेक मी टू, और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म की प्रैक्टिस। सो इट विल टेक मी टू, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अब बात करते हैं, इट विल टेक 3 आवर्स टू मेक दैट, टू मेक द प्रोजेक्ट। इट विल मोहित सर, 2 सेंटेंस गलत हो गए, पहला सही है। इट टेक्स मी 1.5 आवर्स टू एडिट माय वीडियो, ओके। इट टुक मी, इट विल टुक सेंटेंस को आप करेक्ट करोगे क्योंकि आपको पता है, आप विल हटा दोगे उसमें से क्योंकि यू टॉकिंग अबाउट द पास्ट। सो इट टुक 3 आवर्स, इट टुक, और प्लीज मी ज़रूर यूज़ करो इसमें। इट टुक मी 3 आवर्स टू मेक द प्रोजेक्ट। It takes me 20 minutes to eat food. Yes, of course, a good sentence. It takes me 4 hours to apply mehndi on both hands. Great. So अगर फ्यूचर में बना रहे हो तो विल के साथ आप टेक लगाओ, बट मी भी ज़रूर लगाओ क्योंकि आप अपने खुद के बारे में बता रहे हैं, फाइन। एंड देन आप बहुत सारे एक्शंस की बात कर लीजिए। नाउ द सेकंड थिंग, जैसे प्रिया मैम ने एक सवाल बनाया था, मैं उस सवाल पे आ जाता हूँ। अगर आपको ये सवाल पूछना हो तो आपको पता है मैंने जो जितने भी सेशंस लिए 75 डेज़ के, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ को डिस्कस किया था। इट टेक्स मी मैम, पूजा मैम, इसमें टू बाद में लगाना है, पहले नहीं आएगा, तो टू को इसमें आपको रिमूव करना होगा। इट टेक्स मी हाफ हाफ आवर्स, नहीं हाफ एन आवर, ठीक है? हाफ एन आवर, आवर्स नहीं, हाफ लगा के उसके बाद में एन और फिर आवर, एच ओ यू आर। इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू मेक सब्जी, ओके। इट टेक्स 4 to 5 hours to complete my project. इट्स गुड। मैं चाह रहा हूँ कि हम सब लोग इसमें मी की प्रैक्टिस करें। अगर आप इसमें मी नहीं लगा रहे तो ये सेंस निकल के आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में इतना टाइम लगता है, यानी कि आप ये मेंशन नहीं कर रहे कि किसको इतना टाइम लगता है, फाइन। सो इट टेक्स, जैसे मैं बता रहा हूँ कि भोपाल से जयपुर पहुँचने में इट टेक्स, अगर मैंने कहा
कार से पहुंचने में 11 से 12 घंटे लगते हैं, और डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑल्सो, बिकॉज द पीपल हु ड्राइव मोर देन 120 की स्पीड से ऊपर जाएंगे, तो आई थिंक इट वॉन्ट टेक मोर देन 10 आवर्स। तो 10 घंटे से ज़्यादा लग ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। फाइन, बिकॉज द रोड कंडीशन इज सुपर्ब, बहुत अच्छी सड़क है। फाइन, सो आई जस्ट वांट टू से दैट इट टेक्स, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा, तो मैंने क्या कहा, इट टेक्स अराउंड 11 आवर्स टू रीच भोपाल फ्रॉम जयपुर। तो इसमें क्लियर नहीं हुआ कि किसको टाइम लगेगा। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक you to make tea? Yes, this is right. It takes me 10 minutes to make tea. Okay, it takes 4 or 5. How much time will it take to edit your video? Yeah, it takes me 10 minutes to reach New Market from railway station. Great, good sentence. By bike, yeah, और ज़्यादा अच्छा हो गया। By bike हो सकता है, by auto हो सकता है। It takes me 5 to 10 minutes to mop the floor. Yes, कबीरा में it takes me टू, रंजना मैम इसमें से टू को पहले हटा दो, ये टू नहीं आएगा, है ना। इट टेक्स मी 1 आवर्स, और वन के साथ अगर आप लगाओगे तो आप उसे प्लूरल नहीं कर सकते, तो आवर्स नहीं होगा, फिर आर होगा, HOUR, बिकॉज इट्स वन। इफ यू आर यूजिंग 2 आवर्स, 3 आवर्स, मोर देन 1 आवर, तो आप आवर्स लगाइएगा टू मेक, और फिर टू नहीं लगेगा टू मेक गाजर का हलवा। जस्ट 1 आवर, because whenever I make gajar ka halwa, it takes more than 3 hours, because I make it on a very low flame, and I, I like to, you know, I like to cook it for, a longer time, because the more you, actually, what I should say, that the more you cook it, it becomes better actually. So नॉर्मल में बता रहा हूँ मैं, फॉर 3 people if you ask me to make गाजर का हलवा, so because last time it took me more than 3 hours to make gajar ka halwa, and of course it was tastier than the market one. Because when it is always said, the when you cook something on, like, medium flame, or on low flame, you don't lose the natural taste of that sabzi and that thing. On the high flame, I means, usually I don't cook food on high flame. I absolutely avoid cooking on high flame. So it takes me 1.5 hour to make biryani. Okay, it takes me 15 minutes to reach the market. It takes me half an hour to make a diagram. Okay, so you're talking about after grating the carrot? Yes, after grating the carrot. I'm just talking about when I start my, when I light the, burner. After that, it takes more than 3 hours. Always, it takes me more than 3 hours. So it takes me 12 minutes to do 12 steps of Surya Namaskar. Okay, that's great. You do it. It's one of the very good exercises, as I can use it. So it takes, and I was talking about the question was very nice, जो सुधीर सर ने ऑलरेडी बनाया था। आप टाइम ड्यूरेशन को दो तरीके से पता कर सकते हो, एक हाउ मच टाइम से, और दूसरा हाउ लॉन्ग से। हाउ लॉन्ग के साथ आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो ज्यादा अच्छा नेचुरल तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं ये, वो हमेशा बनता है हाउ लॉन्ग और डज इट टेक। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, डू यू मत लगा देना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू, और उसके बाद उस एक्शन को लगाना जिसको आपको करने में टाइम लगता है। ये लाइफ का सेंटेंस है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू, सॉरी मैं इसमें टेक लगाना भूल गया हूँ। It's my second mistake of the day, so I hope you don't do it. How long does it take you to, I must remove it, so you shouldn't do that. It's fine. So I'm just rewriting that sentence. Fine. So the sentence is, how long, now you're gonna ask me this question. Fine. How long does it take you to, और ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आप लोगों को मुझसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आप, ठीक है।
It takes me 5 minutes to reach market. Good. It took me 2 hours to make malai kofta. Yep, malai kofta and these sabjis. So my mom made within half an hour. I don't know, like literally, because gajar ka halwa, if you make it, I think half an hour for me, like I never because I usually follow one of my very favorite cooks, if you ask me, or chefs you ask me. I always follow a lot of, there are many people, not like celebrities, but as far as celebrity chefs are concerned, I always follow Mr. Ranveer Barar. Ranveer Barar, if you look at his recipe, you will see that जो बहुत अच्छे बनाते हैं, जो लोग करते हैं, it should take more than 2 hours. 2 घंटे से ज्यादा लगना चाहिए, अदरवाइज यू वॉन्ट हैव दैट टेस्ट, होगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, वो जो मिल्क जो है ना, वो उतना आपका गाजर में भी गया ही नहीं है, यू डोंट गेट दैट टेस्ट एक्चुअली, यू आप वो थोड़ा सा रॉ टेस्ट आएगा, वो कच्चे वाला टेस्ट आएगा, वो पका हुआ नहीं होगा। जो दूध होता है ना, वो अपने आप इतना पकता है उसके अंदर, सो it becomes mawa itself, because I never add mawa in that. I make that दूध ना, जो मिल्क होता है, उसको उसी में मावा बनाता हूँ, so that's why it takes more time. So there are, like, जो दूसरों के पास है ना, इजी तरीका ये कि उसको सिंपल बना लो, स्पेशली सम पीपल लाइक टू फ्राई एंड आफ्टर दैट उसमें मावा ऐड कर लो, एंड इट्स अ शॉर्टकट वे, बट मैं मावा ऐड नहीं करता। सो good evening, Divyanshi ma'am. It's time to go. Got late, sir. Actually, I'm at wedding. That's why I didn't join the session on time. But now it's time to say goodbye. Bye bye. Okay. How long does it take you to prepare notes for sessions? It takes me usually it takes me more than 1 hour, because I really prepare well for that. And in my mind, actually, there are so many questions that occur. How long does it take you to make cake? Cake. It takes me from the very beginning till the end. If you ask me, it takes me around 1.5 hours. I bake it for. I usually, I have always made cakes in pressure cooker, and usually, if you just only talk about the baking time, it's around 40 or 45 minutes. Rest is the preparation time. I'm quite slow at doing it, because I enjoy everything, every step of my cooking. That's why it takes me time. How long does it take you to reach Bhopal from Jaipur by bike? Somewhere 10 to 11 hours. Is it right? How long does it take you to make cake? Yeah, it's right. सिमी मैम का था, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू मेकिंग टैटू, गलत सेंटेंस है, टू मेक अ टैटू बनेगा, नॉट मेकिंग टैटू। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच भोपाल, सुधीर सर का, हाउ लॉन्ग टेक यू डज इट टेक यू टू टाइप अ लेटर? It takes seconds. It takes me 5 minutes to type a letter. Oh, how great! You got a good speed, I guess. How long does it take you to tattooing नहीं आएगा? How long does it take you to टैटू? टैटू एक्शन भी है, तो आप टैटू लगा सकते हो, मैं समझ जाऊंगा वहाँ टैटू करने की बात हो रही है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू मेक शॉर्ट्स वीडियोस? Good question. Shorts video means it takes me, like, recording and then editing, I guess half an hour. First she makes it on cooker, and then she uh, I never yeah, that's why I never make it in the cooker, because I never I avoid making, even if you ask me dal also, I avoid using cooker, because some people say that it's good, but somewhere it brings the cooker, whatever, like even vegetables and rice also, it brings some gastric problems. So gastric problems hoti hain sometimes when you eat pressure cooker cooked food. So I avoid it. I usually boil it in another big bowl. So I never pressure cooker it.
How long does it take you, girls? How long does it take you to make short videos? Okay, how long does it take you to लगेगा उसके बाद to make rice kheer. I also don't like मावा वाला हलवा. दूध ज्यादा bad. जिंदाबाद. अच्छा, दूध जिंदाबाद. Okay, bad was different. Na? So how long does it take you to make sketches? Uh, A4 size, it takes me. It all depends on the uh, details. So usually it takes me around 7 to 8 hours. A4 size, and if it is more than A4 size, then sometimes 10 hours, 15 hours. How long does it take you to make aloo paradas? Whole preparation, if you ask me, around 1 hour. How long does it take you to shoot, not to shoot a video? Okay, well, I understand. It's a just a slip of typing. How long does it take you to shoot a video for new dish? It takes me hardly 2 or 3 minutes. It doesn't take much now because after doing many shoots, I feel more confident now, and it takes me less time. That's why it is always said, the more we practice, the less you know it takes in the future. How long does it take you to make a dream catcher? I think I have answered it, Simi ma'am, that it depends on the size. If it's a small size, the back, I mean, in my back, you, if you see, so the smaller one, it takes around 5 to 6 hours, and the medium size is around 10 to 12 hours. And if they are very big, then it takes, if I just only count the hours, then it takes more than 20 to 25 hours. How long does it take you to make a drink? How long does it take you to make pasta? Pasta, it takes me in the beginning, cutting and making it. It takes me more than 30 minutes and less than 40 minutes. So let's say 40 minutes. So how long does it take you to make Almira? Did it take you? It took me months actually. Means if I count it in the because I'm an artist, and because, and I was making it at my only home, so I just worked, or I made it when I felt like doing it. I didn't do it like other way. So I was like. I had, means when I was in my mood, then only I made it. I was not continuously making it. So it took 2 or 3 months time. But if you count it in the hours, I think around 50 hours. How long did it take you to make Almira? How long did it takes? अच्छा, how long it takes to wash your car? आपका क्वेश्चन सही है मोहित सर. बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा इसको, बिकॉज इंग्लिश का एक रूल कहता है, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश का रूल कहता है, लिखने राइटिंग वर्क में ये बिल्कुल नहीं चलेगा. बोलचाल में रूल चल सकता है, जिसमें हमारे पास इंग्लिश का एक रूल कहता है कि जब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे हाउ लॉन्ग, इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो जब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होता है तो हम डू डज डिड, जो 3 टाइम वर्ड होते हैं, उनको हटा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे अभी आपने पूछा. ठीक है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू वॉश योर कार. फाइन. सो ये क्वेश्चन राइट है स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से. बट जब हम लिखने पर आएंगे, फॉर्मल राइटिंग की बात करेंगे, कहीं एग्जाम्स की बात करेंगे, तो ये सेंटेंस में अगर मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैं आपका नंबर काट लूंगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए होता, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू वॉश योर कार. No, sir, now it's more than 30 minutes and less than 40 minutes. Oh, sorry. I am really sorry. I didn't really, I was so much busy in answering your questions. So I am so sorry for delay. Now, thank you so much. Nice being with you. Because I have to even pack my luggage also. And I thought I would leave it at the right time. I think it's just 10 minutes ahead. So from my side, have a wonderful night. Have a great time. You can wish me a happy journey, and thank you so much for being present in today's session. Welcome. So good night. I just want to leave as soon as possible. Fine, because अभी आप लोग मुझे करेंगे, तो I can't stay here to answer. So please take my good night. I'm just
leaving now. Uh, Thank you so much. Happy journey. Not by this. Shh. So by this. So you can do this. So good night, sir. Take care. Priya ma'am, good night. Everyone, good night. Please, happy journey. Thank you so much, Pooja ma'am. Thank you so much, sir. Your efforts. Yeah. Well, so I just want to say, Divyanshu ma'am, do watch it because I think you haven't seen. There was important rules also in the beginning of the classes. Fine. Thank you.